single day I'm gonna make something great. Hello everyone and welcome to my channel, Delightfully Frustrated Mom. So, rainy season is here. और पहली बारिश किसको पसंद नहीं है? पहली बारिश में जो घर पे छतरी छोड़ के बाहर कूदने का और भीगने का मजा आता है वो अल्टीमेट है बॉस। और ऐसी बारिश में मन करता है कोई गरम गरम चाय बना के साथ में थोड़े पकौड़े भजिए बना के बस दे दे और हम विंडो पे बैठ के फुल मजा ले। मेंढक की तरह हमें भी हमारे घरों से बाहर निकलने का मन करता है और सब इतना ब्यूटीफुल एंड ग्रीन लगता है कि रोमांटिक सॉन्ग्स और भी ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। हमें हमारा बचपना भी याद आता है और साथ में टीनेज डेज भी याद आते हैं जब हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, क्रशेस होते थे, all those silly moments. But rain is beautiful. It never comes alone. It comes along with a lot of sickness, cold and cough and fever and doctor visits. And we all know that children keep on falling sick. They are always with a runny nose and we are after them with a handkerchief. And once the season kicks in, it increases all the more. Today morning only when I went to school, I realized there were 4 students who didn't turn up just because they have fallen sick. And it happens, you know. And you catch from them, they catch from you. So it's like it keeps on going on. So I'm going to share you one small recipe and which surely work wonders. It's a very simple, quick thing which you can do with your child, and it's extremely safe remedy. And you can take it, you can make it at home in minutes, and it affects great. And also, what you can do is you can prepare beforehand. So before the season kicks in, you can start doing it from the very beginning. It really works wonders from children from 1 to 3 years of age. So you can do that for yourself as well and for your children as well. So if you like my recipe, please click on like and subscribe to my channel. So first we'll take mustard oil, which is राई का तेल. मैं तो कुकिंग भी इसी में करती हूँ. It's very healthy. Then we will add 1 to 2 cloves of garlic, which is लहसुन. और उसमें हम डालेंगे अजवाइन के दाने, just carom seeds. और उसमें 3-4 लौंग डालेंगे, which is clove. और गार्लिक को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे so that इसके जूसेस बाहर निकल आए और ऑयल में ये अच्छे से मिक्स हो जाए. करेक्ट, लाइक दिस. फिर आप सब मिक्स करके इसे गैस स्टोव पे स्लो फ्लेम पर आप हीट करिए अच्छे से तब तक जब तक गार्लिक ब्राउन हो जाए. प्लीज ओवर कुक मत करिए कि गार्लिक ब्लैक हो जाए, नहीं तो इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टीज. फिर आप इसे छान दीजिए और जितना भी एक्सेस ये है आप इसे थ्रो कर दीजिए एंड योर ऑयल इज रेडी. एंड नाउ दिस ऑयल इज रेडी टू फाइट विद कोल्ड, कफ एंड फीवर. आई डोंट अश्योर यू कि इससे आपका बच्चा सिक नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीजन स्टार्ट होने से पहले आप ये करते हैं रेगुलरली ऑन योर चाइल्ड्स लेग्स, हैंड्स, चेस्ट एंड बैक, देन आई अश्योर यू कि ही कैन डेफिनेटली फाइट विद द कोल्ड एंड कफ और उसको कंपैरेटिवली कम सर्दी होगी एंड ही विल बी गेटिंग लॉट ऑफ इम्यूनिटी. ये मेरी मदर की रेसिपी है. होप यू ऑल लाइक इट. प्लीज समझ में मत करिए. दिस ऑयल इज. So if you like my recipe, which is extremely cheap, accessible and extremely safe for your child, then please hit on the like button and subscribe to my channel for more such recipes. Till then, bye bye.